any time now. So Union Home Minister Amit Shah arrived along with Tipra Motha founder Pradyut Deb Barma, along with Motha chairman Jagdish Deb Barma, President Bijay Ranghal and leader of opposition Animesh Deb Barma. They are also present along with Tripura Chief Minister Manik Saha, MP Biplab Deb and Tripura Chief Secretary. So history will be created in just few moments. We are showing you live visuals coming in from inside the North Block, where the signing in ceremony of the Tiprasa Accord will take place any time now. So indeed a historic day for the Tiprasa people. History will be created anytime now, just after a few moments. And Northeast Live have been covering the issue very closely. And as you can see on your screen, so the signing in ceremony will start anytime now. The Tiprasa Accord will be signed just after a few moments. All right, we straight away cut across live. So all right, you can see live visuals coming in. सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी, हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, हमारे होम सेक्रेटरी साहब पीयूष गोयल जी, तपन डेका जी, एडवाइजर्स, प्लान डायरेक्टर और अपने समाजपति और हमारे सब लीडर्स जो यहाँ में आए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर नॉर्थ ईस्ट के मिस्टर पात्रा जी, मैं सबसे पहले गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो 75 साल से हमारे त्रिपुरा के जनजाति थे, जिनको काफ़ी कष्ट से गुजरना पड़ा, हमारा ये जो राज्य है त्रिपुरा में एक बॉर्डर स्टेट है और 75 साल से काफ़ी हमारे रीजन को और हमारे राज्य को निग्लेक्ट किया गया था। मैंने महसूस भी किया है और मैं स्वीकार भी करता हूँ आज सबके सामने, मीडिया के सामने, कि जो आपने कदम उठाया है, इससे सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। हमारी भाषा, हमारी ज़मीन की अधिकार, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी कल्चर, सभ्यता और इतिहास को आज ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन करने के बाद जो आपने एक दिशा दी है गृह मंत्री जी, इसके बाद मैं 100% कंफर्म कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में हम सब कह सकेंगे सबका साथ सबका विकास। गृह मंत्री जी, आखिर में मैं अपने पर्सनल अपने तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्यार हमें दिया है, जो आपने सम्मान हमें दिया है, ये मैं अपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ये आपको करने का कोई, आपके पास बहुत काम है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो आपने हमें आश्वासन दिया था, वो आश्वासन आपने पूरा करके आपने सिर्फ हमारा दिल नहीं जीता है, आपने हमें एक ऐसा विश्वास दिया है कि सब चीज़ मुमकिन है अगर आप हमारे साथ हैं। मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमेशा कोऑपरेट किया हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच मुख्यमंत्री जी। और हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने भी हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया था, पहले भी किया है और आने वाले दिन में भी मेरी आशा है कि आप करेंगे। आखिर में ये जो अग्रीमेंट होगा, जो आपने आश्वासन दिया है कि टाइम बाउंड मैनर में होगा, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे लोग मेन स्ट्रीम में आए और एक नए त्रिपुरा के ऊपर हम ध्यान दें, जिसमें आंदोलन ना हो, जिसमें रुकावट ना हो और हम एक ऐसी दिशा में जाए जहां में हम एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बना सकें। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आई वंस अगेन वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। माई ग्रैंडमदर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन 1949 and we became a part of India. Today, because of the Home Minister, that time Sardar Patel ji was the Home Minister, today Amit Bhai is the Home Minister, and because of his personal interest, I, the grandson, has been able to sign this, and I take it as an immense pride, and I promise you that we will deliver a Tripura which will be signed this, and I take it as an immense pride, and
I promise you that we will deliver a Tripura which will be a role model for the whole of Northeast. Thank you so much. Very much. बहुत बहुत धन्यवाद श्री संतोष देववर्धन जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा को उनके संबोधन के लिए सबको नमस्कार। आज भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के मध्य जो समझौता अभी साइन हुआ है ट्राइपार्टीट, और उसको सामने रखते हुए हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी, जिनके कारण ये संभव हुआ है। इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक वर्मा जी उपस्थित है, जो फाउंडर ऑफ त्रिपुरा, और हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा के 2 मिनिस्टर यहाँ उपस्थित है। एक तो ये विकास देव वर्मा और शुक्लाचरण महातिया जी, और ऑनरेबल राज्यसभा एमपी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री विक्रम कुमार देव जी, ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ त्रिपुरा असेंबली श्री वनिमेश देव वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है, और भी बहुत सारे जो लीडर्स आपका त्रिपुरा से आए हुए हैं और IKT से भी आए हुए हैं, और रेस्पेक्टेड सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल एंड त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नीड ऑफ द आवर के लिए बहुत जरूरी था। हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबको लेके चलना है। बहुत दिन से ये चल रहा था, खुद भी महाराजा जी भी कह रहे थे कैसे कैसे ये 75 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सब एक साथ जाति जनजाति दोनों मिल के त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छे लीडर है माननीय प्रधानमंत्री जी है, भाई अमित शाह जी है। तो इसलिए जैसे देखिए ये जो आप बता रहे हैं जो संभव हुआ, अभी इनके कारण ही ये संभव हुआ, और हम चाहते हैं कोई भी इसमें रुकावट नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगा, और आने वाले दिन हम लोग एक साथ किसी भी जगह में कोई भी समस्या होगा या कुछ मैंने डाउट हो तो हम लोग आके बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं। और जो विषय यहाँ पर आया है मेरे ख्याल से ये जरूर हम लोग इसको मैंने रियलिटी में हम लोग बदलेंगे, और हम चाहते हैं त्रिपुरा वासी सब ये आज का जो ये ट्राइपार्टीट जो एग्रीमेंट हुआ है सब खुश होंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच जो उपस्थित हैं त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अभी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विक्रम देव जी, उनको संबोधित। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अष्टलक्ष्मी के नाते जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आपने काम किया है और गृह मंत्री जी ने, और उनको बताने के लिए मेरे पास भाषा नहीं है, जिस तरीके से आपने गृह मंत्री के नाते नॉर्थ ईस्ट के अफसर से लेके सब कुछ हमारे एनएलएफटी के सरेंडर से लेके हर विषय में आपने बहुत ही दिल से दिल और दिमाग दोनों मिला के काम किया, उसका ही नतीजा आज। और मैं माननीय गृहमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय मानिक शाह जी को, और हमारे मित्र और त्रिपुरा माता का फाउंडर महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक, हमारे हमारे त्रिपुरा माता के अध्यक्ष विजयानंद जी, उपस्थित सभी हमारे नेतृत्व और भारत सरकार त्रिपुरा सरकार के ऑफिशियल्स, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जो इस काम को जिस तरीके से किया गया है, इससे निश्चित त्रिपुरा सुंदरी माता की इस भूमि को बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, और जाति जनजाति का मिलन स्थल त्रिपुरा है। त्रिपुरा का आज नया स्वागत मिला है। मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृहमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस ऐतिहासिक 70 वर्ष आज हुए हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा मार्गदर्शन।
के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, तिपरा मोथा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारी, मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि तिपरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था
मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बस हो गया भाई मीडिया। All right, history has been created, so I would straight away go to live with our editor-in-chief, Wasbir Hussain. So, Wasbir, history has been created. The Tiprasa Accord has been finally signed. Wasbir. Absolutely. History has been created as far as Tripura is concerned. Union Home Minister Amit Shah said very, very categorically that the tribal people of Tripura will no longer have to agitate for their rights, no longer have to press for their rights. He said the union government, the central government will move 2 steps ahead always to protect the interest and rights of the tribal people of Tripura. Now, Home Minister Amit Shah also acknowledged the role played by the Manikka the family, that is Pradut Debarban, the present Tipra Motha founder and Royal Science grandfather, role during the Bangladesh liberation, how they protected the Hindu Bengalis in Bangladesh and provided them shelter and so on. So they have acknowledged the role of Pradut Manikka and his father and his grandfather. Now, what is of significance is that the accord has been signed. The Tipra Motha Accord has been signed, and this is yet another chapter. There has been, as Union Home Minister Amit Shah said, there has been 11 accords signed in the Northeast in the last couple of years. That includes border agreements between 2 northeastern states that talks about that, and that includes accords concerning people's identity, that includes accords with militant groups, including the accords with the ULFA, and now the Tiprasa Accord, that brings in political and financial autonomy to the tribal people of Tripura, that gives identity to the Tripuri Kokborok language, and so on. And what we are also getting to know, we will come to confirm you in a short while from now, that a tripartite committee will be formed now that the accord has been signed. A tripartite committee will be formed between representatives from the Tipra Motha, the state government and the central government regarding implementation of the Tiprasa Accord. And now that committee will go about the task of implementing the accord within the coming 6 months. So these are very big political developments. Now that the accord has been signed on the eve of the Lok Sabha elections, naturally the question arises whether Tipra Motha, which is the main opposition party in Tripura, will become an ally of the BJP, whether they will be work in tandem to secure the victory of the 2 Lok Sabha seats as far as Tripura is concerned. So we'll have to wait and watch on that. But Tipra Motha is
not yet is the main opposition party in Tripura. It is not a member of NEDA, although the NEDA convener and Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma played the role of a catalyst and so on. Pradut Debarman also gave a very emotional speech at that signing ceremony at the North Block. He said that the tribals' rights, the way the center appreciated the rights of the tribal people of Tripura, the way the center agreed to accept most of their main demands that Tripura Motha had placed. So he thanked the Union government, the Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for their understanding of the sentiments of the tribal people of Tripura. So on the whole, it has been a very cordial atmosphere that has prevailed during the signing ceremony that can be gauged from the speech of Tripura Motha founder Pradut Debarma, as well as the address of Union Home Minister Amit Shah, who acknowledged the role of Pradut Debarman's royal predecessors as far as Tripura is concerned, their role in making the overall composite society in Tripura and so on. So on the whole, a very, very historic moment as far as Tripura is concerned and as far as peacemaking is concerned, in not just in Tripura but in the whole of the Northeast. Right, Wasbir, so indeed a very big day for the tribal people in Tripura, and Wasbir, also Northeast Live has been covering the Tiprasa issue very closely since day one. Absolutely. Northeast Live first broke the story that the Tiprasa Accord will be signed today. That is the first story, the only channel to have broken that story. And Northeast Live has also broken more or less the shape of this accord. We will come to know in a short while from now as to what the accord contains, what are the provisions of the accord. But Northeast Live has managed to give its viewers just a sense of what the accord is going to contain. Now we said that the Tiprasa tribals will get their land rights, there will be protection to their land, their language, and they are also going to get political and financial autonomy, because the Tripura Motha has been demanding direct funding from the center and so on and so forth. Now we have been able to give our viewers a sense of what the accord is going to contain. Of course, we'll be able to give you the detailed provisions of the accord in a short while from now. We are already in touch with our sources who were at the North Block signing that agreement. Right, Wasbir, now also we are being joined live with our correspondent from Delhi, Siddharth Bhattacharya. Yes, Siddharth, can you hear me? आप सुन रहे हैं क्या? मुझे सुन पाते हैं? Can you hear me now? Yes. 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 Okay, सिद्धार्थ, क्या नेतागण जो है जिन्होंने साइन किया त्रिपुरा मोठा के लीडर्स, when are they coming out of that meeting hall? जी हाँ, वाजबीर साइनिंग इन प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है और कुछ ही समय बाद जो है ये सारे जो लीडर्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे। लगभग 10 मिनट के अंदर जो है बाहर निकल के आएंगे। अभी इनफॉर्मल एक टॉक चल रहा है, उसके बाद जो है ये लोग बाहर आएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर जो है जितने सिग्नेटरीज है वो बाहर आ जाएंगे। और क्योंकि जो सिग्नेटरीज थे उनके साथ जो है आफ्टर साइनिंग द MOU जो है एक इनफॉर्मल टॉक होता है और उसी के चलते थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी क्योंकि तुरंत ये ख़त्म हुआ है और लगभग 10 से 15 मिनट बाद जो है सारे जो लीडर्स होंगे वो बाहर निकल आएंगे होम मिनिस्ट्री से। और अभी उसी का प्रिपरेशन चल रहा है और उसके बाद जो है यहीं पे जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग के समय हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस MOU में क्या क्या रखा गया है और कौन से पॉइंट्स को लेकर के ये MOU साइन हुआ है। वाजबीर, सिद्धार्थ, वहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ नेता त्रिपुरा मोठा के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उसमें प्रद्युत देबबर्मन थे, अनिमेश देबबर्मा था, उनका प्रेसिडेंट जगदीश देबबर्मा था, उनका चेयरमैन उनका प्रेसिडेंट बिजोय रंखा थे, उनका चेयरमैन जगदीश देबबर्मा, और यूनियन होम मिनिस्ट्री खुद वहाँ मौजूद थे जिन्होंने भाषण भी दिया।
तो यूनियन होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के विप्लव देव भी था वहाँ पे, हमने देखा। तो मुख्यमंत्री तो था ही मानिक साहा। तो इनके अलावा आपका नज़र में कोई और कौन कौन था, और क्या यही लोग थे या कोई और भी लोग थे वहाँ पे? जी हाँ, आपने जैसे बताया बेसिकली तिपरा मोठा के यही लीडर्स उपस्थित थे, और इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा उपस्थित थे, और विप्लव देव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के सांसद है विप्लव देव यहाँ पे उपस्थित थे। क्योंकि सारा जो प्रोसेस शुरू हुआ था विप्लव देव के समय से ही जो है बातचीत का जो सिलसिला हुआ था पहले शुरू हुआ था, और उसके बाद जो है मानिक साहा के दिन में ये जो पूरा तौग है उसको जो है एक फाइनलाइज एक टाइम दिया गया है, और उसको अल्टीमेटम मतलब फाइनल कर दिया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री के हिसाब से विप्लव देव यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, और इसके अलावा वर्तमान के जो मुख्यमंत्री मानिक साहा है वो उपस्थित है, और इसके अलावा प्रद्युत देव बर्मन के नेतृत्व में जो है तिपरा मोथा के पूरा टीम जो वरिष्ठ जो लीडर्स थे, सारे लीडर्स आज यहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने जो है इस MOU साइनिंग प्रोग्राम में पार्ट लिया है। Siddharth, we will also go to Pinaki. We will ask our producers to line up Pinaki. Siddharth, ये भी बात सही है कि नेडा की कन्वेनर और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी इस बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण रोल उन्होंने भी प्ले किया था। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के जो देखरेख में शुरू हुआ था, और मैं एक बात नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज से कुछ ही दिन पहले जो है प्रद्युत देव बर्मन ने डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था, और उसी के बाद जो है आज का डेट रखा गया था, ये जो है MOU साइनिंग के लिए आज का डेट रखा गया था। और ये पूरा जो मामला है, पूरा जो तिपरा मोथा का जो डिमांड था, जिसको कि जो डिमांड था ग्रेटर तिपरा लैंड का, वो ग्रेटर तिपरा लैंड से ला करके जो है ये एक MOU तक लाना, ये पूरा जो सिस्टम है उसका अहम हिस्सा है नेडा के कन्वेनर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, और उनके देखरेख में ही पूरा जो ये कार्यक्रम हुआ, पूरा जो ये MOU बना उनके देखरेख में ही बना, और उनसे लगातार संपर्क में रहे प्रद्युत देव बर्मन और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, और उनके बीच जो है एक 20 का जो लाइन निकालना होता है वो काम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया था। और जो है इसका कहीं ना कहीं श्रेय नेडा के कन्वेनर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को जाता है, जो कि आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके जो महत्वपूर्ण स्टेप्स थे उसके कारण ही जो है ये आज का जो है MOU साइनिंग प्रोग्राम जो है एक सफल समाप्ति हुआ है। और ये नेता बाहर आने वाले हैं, आप देख सकते हैं कुछ ही समय बाद ही ये नेता जो है बाहर आ जाएंगे। हम मीडिया को मीडिया से बातचीत करेंगे, हम कुछ 5 मिनट का इंतजार हम यहीं पे उनका इंतजार करेंगे, और क्योंकि मीडिया को बाहर नहीं रुकने दिया जा रहा है, हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ, आप बने रहिए, नेतागण अभी निकालने ही वाला है मीटिंग वेन्यू से, आप बने रहिए। We'll bring you live coverage of the direct first comments of the Tripura Motha leaders as soon as they come out of that meeting hall, room number 9 at the North Block in New Delhi. That is the Union Home Ministry headquarters. The signing ceremony took place at room number 9 at the Union Home Ministry, that is the North Block in New Delhi, and all these leaders are now going to come out, as Siddharth, our reporter who is on ground zero at the MHA, told us. We will bring you live coverage of that. Now this is a big day, and as I have been telling since morning, the first accord in Tripura was signed in 1988 between the tribal national volunteers and the government of India. That time it was headed by Mr. Bijoy Rankal. He was an insurgent leader in 1988 when the accord was signed, and the same Bijoy Rankal today is the president of Tiprasa.
Motha. So he must be also extremely emotional. We'd like to talk to Bijoy Rankal as well. This must be emotional. He must be on a flashback mode. But yes, the accord was signed in 1988, but the tribal aspirations were not fulfilled. That accord, TNV accord, failed to fulfill the aspirations of the tribal people. The tribal people wanted land rights, they wanted political and financial autonomy and so on. Therefore, the Tipra Motha, when it came on the scene under the leadership of Royal Scion Pradyut Debbarma, that fresh hopes were infused into the minds of the tribal people. Once Pradyut Debbarma took charge of Tipra Motha, the tribal people got with a ray of hope that at last they are going to get their due, because they had that much of respect for their Royal Scion, because for the tribal people he is fondly called Bu Bagra, or the king. So this is the backdrop in which the Tipra Motha Accord has been signed. The differences were there, they were sorted out in the last meeting earlier. Sambit Patra, the BJP's point person on the Tiprasa issue. And so after these differences were sorted out, everybody thought that the date will be announced and the signing will be done, but Pradyut Debbarma came back to Agartala and decided to continue with his fast unto death. So that gave an indication that something went wrong at the last moment. And Tipra Motha founder indeed went to Hatai Kotor and launched a fast, but just as he finished his yagya and was beginning his fast, he got a call from New Delhi to go to New Delhi to continue with the dialogue, and he rushed to New Delhi, and along with, of course, the very next day, the Tripura Chief Minister, the Chief Secretary, and all the senior top leaders also left for New Delhi. And then, of course, by yesterday, Notice Live was able to break the news that the accord will be signed today and that the signing ceremony will begin from 12:30 p.m. That exactly happened, and the signing ceremony was done around 1 p.m. today. And now we are all waiting for the top leaders of the Tipra Motha, led by Pradyut Debbarma, to come out of that meeting hall and speak to the media. Priya. Yes, Wasbir will stay with the visuals. We also have over phone line our correspondent from Agartala, Pinaki Das. Pinaki, what is the mood? Can you describe the mood? Have you spoken to anybody? We'll request the producers to have Pinaki live actually from Agartala. Pinaki, if you can hear me, what is the mood in Agartala? All right, Wasbir, we have lost a connection with Okay, let's have Pinaki live. We'll tell our producers to have Pinaki live from Agartala. If he can go to the Tipra Motha office, we will show them the Tipra Motha office in Agartala to start with. So that's what we plan to do. We'll tell our producers to mobilize our reporters in Tripura to get reactions from the Tipra Motha, or for that matter, the tribal people of Tripura. And I think our producers are already on the job to mobilize our reporters on the ground to get reactions from the Tipra Motha and the normal Tiprasa people, the ordinary Tiprasa people, about the historic development that has taken place, that is the signing of the Tiprasa Accord. Priya. All right, Wasbir, now we are joined live with our Tripura correspondent Pinaki Das. Pinaki, what is the mood around you? Happy, particularly the indigenous people are happy. Even the non-tribal people have expressed. Earlier speaking to Northeast Live, see, the indigenous people have been deprived. This is a fact. They are not developed. Everyone wants to be developed, and the state will develop only when everyone is developed. So no one have everyone will be happy, and we expect that still now the stage is there at Hatai Kotor, and people are sitting there to show their solidarity to Pradyut Kishore Debbarma. There will be a mood of happiness, and hopefully, if not today, by tomorrow, the leaders will return back to Tripura, and this is a historical moment for the state, and we expect that with the signing, the development in the right sense for the tribal indigenous people will happen, and which is, as BJP says, Sabka Saath, Sabka Vikas. Right. That will bring Sabka Vikas. Right. Pinaki, our sources are telling us that that stage, that dais in Hatai Kotor was not dismantled when
Pradyut Kishore Debbarma left for Delhi that day. Now we are hearing that there is going to be a big victory celebration right at Hatai Kotor. That's what we are hearing, if not in Agartala. Exactly. Pradyut, that is what I said, that it must be a big mood. We are trying to collect some footage from there for Northeast Live. And there will be the main celebration. But overall, there is happy, people are happy because no one wants the situation which was created in Tripura earlier, the disturbance which has disturbed the peace, tranquility and development of the state. No one wants that. No one should feel deprived. This is Tripura where the majority people are non-tribal, but the fact is this was a tribal state. That was the scenario proposed the India's independence and before Bangladesh, formation of Bangladesh. So people had migrated to this side, largely the Hindu population, and the Maharajas also had given land to them. So people are happy with what is happening. Everyone wants development. Why should that indigenous people be behind? Everyone's development that is an important point, Pinaki. As I said, will be Pinaki, that is an important point that you have made. Before independence, before the emergence of Bangladesh, Tripura was a tribal majority state, and after the emergence of Bangladesh, the Hindu population migrated, and then the Maharaja of Tripura gave them land. That is what was acknowledged by Union Home Minister Amit Shah during his address. He acknowledged the role of the grandfather of Pradyut Kishore Debbarma, who gave land to the Hindus who migrated from Tripura, and therefore, as you rightly said, Pinaki, I think those population who had their origins in Bangladesh or earlier East Pakistan, they should be also happy today that the Tiprasa Accord under the leadership of the Royal Scion Pradyut Debbarma has been signed in New Delhi. Exactly. Even Pradyut Kishore had repeatedly said that I don't want to deprive someone or take someone's rights and go for the development of the indigenous people. Everyone's development is required. I only want the indigenous people's right that should be guaranteed by the central government, and that is where he was emphasizing on repeatedly written commitment from the central government. So there, that has led to this delay, the entire process. And what we are hearing from our source, the final draft, that is the third one. Earlier there were two, those were changed. There were dialogues, and that was taking the time. And that with that, people are losing their patience, particularly the indigenous section of the leaders in Tipra Motha. They are losing their patience. A section, Pinaki, even the supporters, they were raising questions on the integrity of Pradyut Kishore Debbarma. Yes, Pinaki, I would like you to go to the Tipra Motha office in Agartala itself to give us initial reactions, because Tipra Motha has an office in Agartala itself. I want you to go there and get us the initial reaction of whoever is there at this point. We are getting reports that people are already gathering in various offices and establishments of the Tipra Motha. Now, we will also keep our reporter in New Delhi on standby, Siddharth, because the Tipra Motha leaders who have just signed the accord are going to come out of that meeting hall any moment. Now, celebrations have begun. This is the breaking story, viewers. Celebrations have begun in Tripura. A huge crowd have gathered at Hatai Kotor. That was what our sources were telling us, that there will be a huge victory celebration in Hatai Kotor once the leaders return. But already a huge crowd has gathered at Hatai Kotor, and 15-kilometer stretch from Agartala to Hatai Kotor blocked as people gather in large numbers. This is the big breaking story on Tripura. Celebrations begin in Tripura, viewers. Huge crowds have gathered in Hatai Kotor. 15-kilometer stretch from Agartala to Hatai Kotor is absolutely chock-a-block with people. People have gathered in large numbers. Road from Teliamura to Agartala also teeming with people. Road from Teliamura to Agartala also teeming with people. Due to signal issues, we are unable to show you the visuals. But we are getting the visuals soon. Our reporters are on the ground. We are going to see those fantastic visuals to you soon. Thousands have gathered at the site where Pradyut Debbarma was supposed to fast unto death.
that this is the big breaking story. Already hundreds and thousands of tribal people have come out onto the streets, and we are hearing that not just the tribals, even other people belonging to other communities have also joined in the celebrations, because the Union Home Minister Amit Shah today acknowledged the role of the Tripura Maharajas earlier in providing shelter to the Hindu Bengalis who had to flee Bangladesh or East Pakistan during the time of the liberation of Bangladesh. There was a lot of chaotic situation where the Hindu Bengalis had to flee, and it was then the Maharajas of Tripura who gave them land and shelter in Tripura, for which the people are now showing solidarity with Pardut Deb Burma. Big story we are tracking on Northeast Live. Over to you, Priya. Right, was very interesting fact, the stage in Hatai Kotar that was set for fast unto death. Now the same stage or the same dais will be, will be used to celebrate the historic day. Absolutely. So, yes. Absolutely, Priya. Yes, the same stage, the same podium that was built in Hatai Kotar for the Tripura's royal scion and founder of Tripura Motha for his fast unto death. Is going to turn into a celebration venue. That is going to be the venue, a symbolic venue where the celebrations are going to begin once the Tripura Motha leaders return to Tripura, maybe tonight or tomorrow. So that's what we are hearing. Big story there. We are tracking. We'll go back to our reporter in New Delhi. Our producers must keep our reporter live. Yes, we have in New Delhi, where we will go back to Siddharth. Siddharth, क्या समाचार है, क्या बात, क्या ये नेतागण निकल आए हैं क्या? All right, so Wasbi, we have lost your connection. We are trying to connect to Siddharth once again. So, grand celebration is on the cards, and why not? The Tiprasa people, along with Pradut Deb Burma, has been fighting for this day since many years, Wasbi. Absolutely, absolutely. This is the day they were waiting for, the signing of the Tiprasa Accord. They were really dejected, because once, as our reporter has also said, as our assistant news editor from Agartala, Pinaki Das has said that, we all know, of course, the fact that Tripura was a tribal majority state until the large number of migration took place of people from Bangladesh and overwhelmed the tribal population and changed the demography. And therefore, thereafter, Tripura saw insurgency, and as I said, in 1988, tribal national volunteers and the government of India signed an agreement, but that failed to fulfill the hopes and aspirations of the people of Tripura. And the Tiprasa people continued with their aspirations, continued with their hope that one day they will get their due. And they wanted land rights, they wanted their language to be protected, that is the Kokborok language. They wanted their children to study in the Kokborok language and take their exams in the Kokborok language, and so on and so forth. They wanted direct funding from New Delhi. They wanted political autonomy, and so on and so forth. But now this accord is all set to give them what they were dreaming for all these years. We'll bring you the contents of the accord soon. But right now we are waiting for the Tripura Motha leaders to emerge from that meeting venue and talk to the media outside the North Block. Yes, Wasbi, we are once again connected with Siddharth Bhattacharya from Siddharth, क्या Tripura Motha leaders क्या आ गया है from the meeting hall? What are you hearing? आप क्या सुन रहे हैं? Priya, if you can hear me, ask Siddharth whether the Tripura Motha leaders have come out or when they are likely to come out. Yes, so Siddharth, yes, can you hear me? Siddharth, am I audible to you? All right. All right, for some. Yes, Siddharth, am I audible to you or Wasbir? Okay, so we don't have yet the connection with our reporter on ground, but we will stay with the visuals from outside North Block so that we don't miss the Tripura Motha leaders going out. We'll tell our producers to speak to the camera person if we are unable to contact the reporter and see what we have to stay with. We will ask our desk also to talk to the reporters. That is the big story we are tracking at this point. Right, so on your screens are the live visuals from coming in from outside the North Block. So the leaders of the Tripura Motha will come out anytime now. Our reporters are right there
to give us all the details. All right, Wasbir, now I'm being joined live with Siddharth Bhattacharya. Yes, Siddharth, can you hear me? Yes, yes. So, yes, so at what time, when will the Tipra Motha leaders come out from the hall? जी हाँ, बिल्कुल अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा वो बाहर निकल के गए हैं, तो कुछ ही समय बाद जो है त्रिपुरा मुठा लीडर्स खासकर प्रद्युत देव बर्मन और अदर लीडर्स जो है वो बाहर निकल के आएंगे। अभी उसी का इंतजार है और वो आके सीधा मीडिया को ब्रीफ करेंगे। हम उसी के इंतजार में है अभी, क्योंकि तुरंत जो है मुख्यमंत्री मानिक साहा वो बाहर निकल के गए हैं, तो लगभग 2-3 मिनट के बाद जो है त्रिपुरा मोथा लीडर जो है वो बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उनका एक इन्फॉर्मल टॉक चल रहा है होम मिनिस्टर के साथ। इसी के चलते थोड़ा जो है बाहर आने में थोड़ा डिले हो रहा है, जैसा हमें अंदर से सूचना मिला है। और कुछ ही समय बाद जो है त्रिपुरा मोथा के जो लीडर्स है प्रद्युत देव बर्मन को लेकर के जो लीडर्स है वो बाहर निकल के आएंगे और आते ही जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे। हम उसी के इंतजार में है, लेकिन साइनिंग इन प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है और जिसके चलते जो है सारे लोगों में जो है खुशी की एक माहौल है। हम जब मुख्यमंत्री बाहर निकल के गए थे तो उनके चेहरे में भी एक खुशी, उनके मुंह में भी एक स्माइल लिखा गया था, और उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा जो माहौल है एक खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री के मुंह में भी एक जो है खुशी झलक रही थी, हम वो देख सकते हैं। और अभी जो है प्रद्युत देव बर्मन जब बाहर निकल के आएंगे तो हम उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कौन से चीजों में जो है समझौता किया गया है, क्या क्या डिमांड उसमें रखे गए हैं एमओयू में, और कौन से डिमांड्स को जो है इस एमओयू में उनको अहम दर्जा दिया गया है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उस समय हम कह सकते हैं कि पूरे त्रिपुरा को करके, त्रिपुरा के ओरिजिनल जो लोग हैं उनको लेकर के जो है ये एमओयू साइन हुआ है, और इसी के चलते जो है इंडिजिनियस जो लोग हैं त्रिपुरा के, जिनके मन में जो है एक खुशी झलक रही है। और खासकर क्योंकि उनके जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है कोकबोराक लैंग्वेज, उसको लेकर के लोग टेंस थे कि कहीं ये कोकबोराक लैंग्वेज जो है वो कहीं उनके त्रिपुरा में वो एकदम से माइनॉरिटी में ना चला जाए। इसके अलावा जो है त्रिपुरा के ओरिजिनल जो इंडिजिनियस लोग हैं उनके हाथ से जो है पॉलिटिकल राइट निकलता जा रहा था, उसको किस तरह से सेफगार्ड किया गया है, वो सारे चीजों के ऊपर जो है ये समझौता हुआ है। और खासकर त्रिपुरा के लोगों के लिए एक खुशी और जो है एक बहुत ही अहम दिन आज माना जाएगा। All right, so Wasbir, Chief Minister of Tripura, Manik Saha, he already left the North Block, and the Tipra Motha members will be coming out any time now. Yes, Manik Saha, the Chief Minister of Tripura, has already come out. That is an indication that the informal talks, the chat or that cup of tea after the accord is over, and the Tripura Motha leaders are going to come out any moment out of that room number 9 at the North Block where the signing ceremony took place a short while ago. And this, as we have been saying, there is brisk celebrations going on among the tribal people in Tripura. The 15-kilometer stretch from Agartala to Hathai Kotor has been chock-a-block with people. It has been blocked with people. The road from Teliamura also is blocked with people. People have come out in large numbers. It's not just the Tiprasa tribal people who have come out to celebrate the accord that has just been signed, but there are other communities also who are joining in the celebrations. Now, several, as far as the political front is concerned, now the political pundits are already talking whether the political arithmetic in Tripura is going to
change now that the accord has been signed on the eve of the Lok Sabha elections. Now, as we know, the Tripura Motha is the main opposition party in Tripura with 13 seats in the 60-member state assembly. And now whether the Tripura Motha is going to transform itself into an ally of the BJP and support the BJP in the 2 seats in the Lok Sabha elections, whether the Tripura Motha will be contesting the Wasbir, we don't know. Yes. Yes, Wasbir, we have with us over phone line Tripura Motha spokesperson Anthony Debbarma. We have Anthony Debbarma, the Tripura Motha spokesperson, on the phone line. Anthony, big congratulations to you. What is the mood? What is the mood among the people? Describe the mood. Thank you very much, Asbir. The mood of the people is very joyful and they are really enjoying and they are really celebrating. This is the first step of the achievement of the Bubagra movement, and in fact, therefore, people with due respect to Bubagra, they have been enjoying right from the time that they got the news that the agreement has been signed. So therefore, you will find the huge crowd here, and in fact, from Agartala towards the Hatai Kotor, for 15 kilometers, it is totally blocked. And also from the north towards to Agartala. Debbarma, where are you, Anthony? Where are you? Right now, I'm here in the Bento in the Hatai Kotor. Okay, we will connect Anthony Debbarma over Zoom line. We will connect Anthony Debbarma over Zoom so that we can show you immediate visuals of the scene in Hatai Kotor. That is the least we can do. I can ask our producers to connect Anthony Debbarma over Zoom so that we can show the videos. Anthony, please accept the call. We are connecting you over Zoom line. You can show it through your phone. We can show our people the live visuals from Hatai Kotor. That is what we are going to do. But otherwise, there are thousands of people right around you. Anthony, there are thousands of people around you, right? Okay, let our producers connect Anthony Debbarma over the Zoom. Yes, this is a big day for Tripura. What are the other inputs you are having, Priya? So Wasbir, celebrations have already begun and thousands of people, they gathered at Hatai Kotor to celebrate the historic day. So that is what we are getting at this point in time, Wasbir. Celebrations have already started and hundreds of people have gathered at Hatai Kotor at this point in time. Connect Anthony Debbarma over Zoom. All right, so celebrations have already begun in Hatai Kotor. So this is what the latest inputs we are getting at this point in time, and hundreds of people have gathered at Hatai Kotor to celebrate the historic day. But on your screens are the live visuals coming in from the North Block, where we are waiting for the Tripura Motha leaders to come out from the North Block as they will brief the media in a short while from now. But also let me tell our viewers here once again that Tripura Chief Minister Manik Saha already left the North Block. And just after a few moments, we are showing you celebration visuals. So hundreds of people, they have gathered at Hatai Kotor. All right, so on your screen are the Northeast Live exclusive visuals. So celebrations have already started. You can see the Tiprasa people, the tribal people in Tripura. They are dancing, they are singing, as today is a historic day for them. And why not? They have been fighting for this day only since many years. So on your screens are the visuals coming in from Hatai Kotor, Northeast Live exclusive visuals. We are bringing you minute-to-minute updates from the signing in ceremony till the celebration visuals. So hundreds and thousands of people, they have gathered at the Hatai Kotor. And also let me tell our viewers here once again that this is the same stage which was been set up for fast unto death. Now this same dais, the same place, the same stage is being used to celebrate the historic day. All right, we'll listen to the ambience of the celebrations.
visuals coming in, and these are Northeast Live exclusive visuals coming in from Hatay, Kotor. So you can see thousands of Tiprasa people. They are dancing to the beats of Bubragra Aega. So they're waiting for their leader, Pradyut Debbarma, and celebrations have already begun. So why not? This is a historic day for the Tripura, the tribal people of Tripura, the Tiprasa people. So as you can see on your screens, the stage is all set and they are dancing. They are celebrating the moment. They're celebrating their big day, the historic day for the Tiprasa people, and they're dancing to the tune of Bubragra Aega. So they are waiting for their leader, Pradyut Debbarma. As you can see on your screens, these are live visuals straight away coming from Hatay, Kotor in Tripura. So grand celebrations underway in Hatay, Kotor in Tripura. As you can see on your screen, celebrations have already begun and thousands have gathered at Hatay, Kotor to celebrate the historic day. So finally, their leader, Pradyut Debbarma, fulfilled their dream. So indeed a historic day for the people of Tiprasa, and you can see on your screens that thousands have gathered to celebrate the day and they are dancing to the tune of Bubragra Aega. So Northeast Live exclusive visuals coming in from Hatay, Kotor at this point in time. বিস্কুটত কালজিৰাৰ চমৎকাৰ চাল ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল স্যাৰ ৰান কেনেকৈ বনাও আৰে গোলমাল কৰা স্যাৰ মাক কিমান ভাল পায় ইমান Aru, it is why. आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है अब, छात्रवृत्ति पाता है। डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है। सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है, वंचित वर्ग के साथी है मोदी सरकार की गारंटी है। हेलो কওকচোন ইমান ভাল চাকৰিটো এৰি বহি থাকিল এতিয়া এনে ষ্টাৰ্টআপত লাগি আছে যিটো আৰম্ভই নোহোৱা হ'ল আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক হৈ যাব আৰম্ভ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে লোন চেংচন হৈ গ'ল দেউতা এতিয়া মোৰ ষ্টাৰ্টআপ হ'ব সঠিকভাৱে আৰম্ভ লোনটো পাই গ'লা কিন্তু গ্যাৰান্টি আছে নহয় দেউতা মোদীৰ গ্যাৰান্টি গ্যাৰান্টি ভাৰতক বিশ্বৰ শীৰ্ষ ইউনিকৰ্ণছৰ দেশ বনোৱাৰ বাবে এতিয়া সকলো ষ্টাৰ্টআপ হ'ব আৰম্ভ ইয়াৰ গ্যাৰান্টি মোদীৰ গ্যাৰান্টি বিপদ যাব খুশি মোদীৰ গ্যারান্টি
কোমল ছালৰ স্পেচিয়েলতকৈও স্পেচিয়েল অফাৰ এতিয়া 5 টকাৰ ভিভেল চাবোন মাত্ৰ 100 টকা ভিভেল লোটাছ অইল আৰে ৰাজু বাবা তুমি নতুন বাইক ললা এনেকৈয়ে উন্নতি কৰি যোৱা বহুত আশীৰ্বাদ দিছো আৰে খুৰী অকল ময়ে নহয় মোৰ দৰে 25 কোটি লোকে দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্তি পালে আৰু গ্যাৰান্টি দিছো কেইবছৰ মানতে আমাৰ দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা একেবাৰে নোহোৱা হ'ব গ্যাৰান্টি কাৰ গ্যাৰান্টি আৰে খুৰা মোদীৰ গ্যাৰান্টি আচ্ছা এতিয়া গ্যাৰান্টি পূৰণ কৰাৰো গ্যাৰান্টি আছে বিপদ যাব খুশি মোদীৰ গ্যাৰান্টি ও মোদীৰ গ্যাৰান্টি প্ৰতি ঘৰতে সৌৰ শক্তি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতি মাহে 300 ইউনিট বিদ্যুৎ ৰাহিৰ এয়া গ্যাৰান্টি হয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত তৈয়াৰ কৰাৰ 1 কোটি ঘৰৰ ছাদত সৌৰ শক্তি স্থাপনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোজনা इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है এই যোজনাৰ পৰা না কেৱল বিদ্যুৎ বিলৰ পৰা মুক্তি পাব লগতে অতিৰিক্ত উৎপাদনৰ পৰা উপাৰ্জনো বৃদ্ধি হ'ব ইয়াক উৎসাহ দিবৰ বাবে চৰকাৰৰ দ্বাৰা সাবচিডি কম সুদত ঋণৰ দৰে বহুতো লাভ দিয়া হৈছে বহুত খৰল প্ৰক্ৰিয়াৰে পঞ্জীয়ন কৰি আপুনিও এই যোজনাৰ হিতাধিকাৰী হওক আৰু 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎৰ লাভ উঠাওক এয়া গ্যাৰান্টি হয় মোদী চৰকাৰৰ Sweet, salty, spicy. Britannia 50-50 গোলমাল Sir, ৰান কেনেকৈ বনাও গোলমাল কৰা Sir, আপুনি মাক কিমান ভাল পায় माँ ईमान আৰু ইট ইজ ওয়াই বিস্কুটত কালজিৰাৰ চমৎকাৰ চাল ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল मेरी माँ फोन से पैसे देती है मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है और टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुंचाया मोदी जी ने इसे सस्ता बनाकर स्वदेशी बनाकर हमारा समय धन और ईंधन बचाकर बिचौलियों को हटाकर मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर डीबीटी का सिस्टम लाकर इनोवेशन को पुश कर स्टार्टअप को बूस्ट कर मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल थैंक यू मोदी जी डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल भारत मोदी सरकार की गारंटी News to keep you ahead. Alright, so on your screens are the Northeast Live exclusive visuals coming in from the Hatay Kotor. So the Hatay Kotor, the same place, if you remember, viewers, where the stage was set up for the fast unto death. Now the same stage is being used for celebration. As you can see on your screens, thousands of Tiprasa people, they have gathered to celebrate. They are dancing, they are singing. Why not? This is a historic day for the Tiprasa people. Now they are waiting for their Bubagra. Deb Barma. So as you can see on your screens, these are Northeast Live exclusive visuals. Our reporters are there in ground zero to give us minute-to-minute updates.
Massive celebrations have begun in Tripura. Huge crowd has gathered at Hatai Kotor, which is, well, Hatai Kotor is 15-kilometer stretch from Agartala. And as you can see on your screens, people gathered there in large numbers. So a road from Teliamura to Agartala also teeming with people to celebrate the historic day. All right, viewers, now we'll listen to Union Home Minister Amit Shah, what he said during the signing in ceremony. Let's listen in. आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि तिपरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ,
और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से All right, so Wasbir, again we are being joined live with Siddhartha Bhattacharya from outside the North Block. Wasbir. Yes, we are still waiting for the Tripura Motha leaders to emerge from that meeting. So we don't know why it is taking some time, whether they are discussing after the accord has been signed, whether they are discussing on how to implement the accord, how to the next course of action, how to implement the accord. That will be the key thing in the mind of the Tripura Motha leadership, how to get the accord on the ground as soon as possible, what will be the modalities for the implementation, because accord implementation, you'll have a nodal point, you'll have a team to actually implement the accord. It's state government's full cooperation will be necessary. The central government will also have to oversee the implementation of the accord. Meanwhile, there's brisk celebrations. The Tripura Motha leaders who are in Tripura are dealing with their huge crowd who have come out on the streets, on all the roads leading to Hatai Kotor, and the tribal strongholds are chock-a-block with people who have come out of their homes to celebrate the historic day. Today, our correspondent Siddharth is on the ground outside the North Block. Siddharth, what news are you getting? Where are the Tripura Motha leaders? अभी जो है अंदर से सिग्नल मिल गया है। त्रिपुरा मोथा लीडर्स अभी हो सकता है तुरंत ही वो बाहर निकल आ सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है अलर्ट हो गया है और हमें जितना सूचना मिला है उनको आफ्टर एमओयू साइनिंग उनको लंच कराया गया है, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। और अंदर जो है एक सीएम विप्लव देव भी अंदर ही है और उनके साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। और क्योंकि लंच कराया गया है इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा आफ्टर साइनिंग ज्यादा टाइम दिया गया है। और होम मिनिस्टर जो कि अभी होम मिनिस्ट्री से वो बाहर निकल के जा चुके हैं और क्योंकि जो है एमओयू साइनिंग के बाद इनको लंच कराया गया, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ है, ज्यादा टाइम लगा है, ऐसा सूचना हमें अंदर से अभी मिला है। लेकिन अभी जो है अलर्ट हो गया है, हो सकता है कुछ ही समय में ये जो सारे लीडर से बाहर निकल के आ जाए। वाकई Yes, there is also speculation going on whether there are political talks going on now with some of the top leaders of the BJP. We don't know. These are too early to comment because Tripura Motha has been firm on the stand that they are not going to side with anybody. They are not going to take sides. They are not going to align with any political party unless they get something in writing. Now there is no question of getting anything in writing because they have signed the accord itself. Now they have given credit, full credit to Prime Minister Narendra Modi. Wasbir, please hold on. We have with us Tribal Affairs Minister of Tripura, Bikash Deb Barma, connecting over phone line. Okay, we are joined by the Tripura Tribal Affairs Minister, Mr. Bikash Deb Barma. Mr. Deb Barma, your first reactions and the signing of the accord. नमस्ते नमस्ते, बहुत बधाई देना चाहते हो हमारा मोदी जी को और अमित शाह जी को। इतना साल का हमारा जो सॉल्यूशन कर नहीं पाया, आज इतना दिन का बाद 70 साल का बाद हमारा मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो 100% गारंटी है। इसीलिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हो। हमारा जनजाति के लिए इतने साल के बाद हम लोग का आज सॉल्यूशन हुआ है। हम मोदी जी को इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा पिछले 70 साल में हमारा जनजाति के लिए किसी गवर्नमेंट भी सोचता नहीं था। आज मोदी जी हम लोग के लिए बहुत कुछ सोचता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ सोचता है, इसीलिए मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बिकाश देब वर्मा जी, अभी आपको क्या महसूस कर रहा है कि 1988 में भी टीएनवी के साथ अकॉर्ड हुआ था, उसमें भी कहीं मुद्दा उसमें भी लिखा गया था कि कोई एश्योरेंस उसमें भी दिया गया था, लेकिन उसने ट्राइबल्स का एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुआ। अभी आपका क्या लगता है ये नया अकॉर्ड जो आज
साइन हुआ है, उससे आपको क्या लगता है? ये तो मोदी जी है तो गारंटी है, मोदी जी है तो 100% गारंटी है, मोदी जी है 100% गारंटी है। इसीलिए हम ये 70 साल का बाद आज एग्रीमेंट हुआ है हमारा जनजाति के लिए। सब कुछ आप देख सकेगा, हमारा जनजाति का सब समस्या समाधान होगा आने वाला दिन में। Okay. Okay. Yes, Wasbir, we are getting live visuals of, we can see former Chief Minister Biplab Kumar Dev, he'll be addressing the media. जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट के लिए छोटे छोटे समस्याओं को समाधान करके डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य का ही आज एक ऐतिहासिक कदम माननीय गृहमंत्री जी ने इस ऐतिहासिक भवन में लिया है। और मैं आशा करता हूँ इससे त्रिपुरा का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और जाति जनजाति मिलके त्रिपुरा का सुंदर एक त्रिपुरा बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा और वो आज उस दिशा में एक बड़ा कदम हुआ। मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक जी को और हमारे सभी त्रिपुरा के लीडरों को और साथ ही साथ त्रिपुरा मुख्यमंत्री जी को और विशेष करके त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए ये एक बड़ा शांति के साथ काम करने का मौका तैयार हुआ। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी काफ़ी तारीफ की आपके कार्यकाल के दौरान जो स्टेप लिए गए। एक सवाल ये है कि जो गैर बीजेपी सरकार थी पिछली, उसमें इस तरह का डिसीजन नहीं हो पाया था क्या? कहीं देखिए, कम था? ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे त्रिपुरा में लंबे समय कम्युनिस्टों का सरकार रहा है और मैं आपको आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना चाहता हूँ। जब 1998 से 23 साल ब्रू शरणार्थी लोग, ब्रू रियांग लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह गए, तो उसका ब्रू रियांगों का भी समाधान 23 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 600 करोड़ के ऊपर पैकेज देके किया गया है। और ये ज़रूर है जो उनका सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं है, राजनीतिक स्तर पे भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों का डेवलपमेंट हो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सब समाधान हो जाए, ऐसा नहीं चाहते थे। बिकॉज ऑफ दैट ये समस्या रह गया है, नहीं तो ये समस्या रहना ही नहीं चाहिए था। अब तक देश स्वाधीन हुआ 76 साल हो गया और वो समस्या अभी भी रह गया। और जैसे हमारा सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ब्रू रियांग जो समस्या बहुत बड़ी समस्या था, आप सोच नहीं सकते जो एक देश में अपने नागरिकों को वहाँ अपना वोटाधिकार ही नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं थे, लोगों को मालूम ही नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ और आज जो हुआ है इससे ओवरऑल जो त्रिपुरा का पीस, जो शांति है, बहुत पहले होनी चाहिए थी, आज ये हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के और गृहमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं दोबारा आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ त्रिपुरा के सभी लीडरों को भी धन्यवाद देता हूँ। All right, so on your screens you can see, all right, so Wasbir, we can see Pradyut Dev Barma coming out of the North Block and he will be addressing the media now. Absolutely, that is Pradyut Dev Barman, the man of the moment, coming out of the North Block after signing that historic accord. We'll stay with the visuals. Big day, he's going to address the media. First of all, I would like to thank the Prime Minister of the country and the Home Minister, and I would like to say that that we have accepted the historical problems of the past and we are looking towards the future. मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और त्रिपुरा के ऑफिशियल्स, होम सेक्रेटरी सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शुरुआत तभी होती है जब हम मानते हैं कि इतिहास में हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ हो। हम आगे देखना चाहते हैं और इसी के लिए मैं अपने सब तिपरासा लोगों को बोलूँगा कि इतना भी मत सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हम अकॉर्ड साइन किया है आज, लेकिन आगे भी हमें बहुत काम करना है। जॉइंट वर्किंग कमेटी के बाद अपने ज़मीन के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए, तो मैं इसी के लिए सबको अपील करता हूं कि हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है,
लेकिन ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और अगर हमें आगे काम करना है तो यहाँ में मेरे साथ मिस्टर बीके रांखौल हैं, हमारे संग हमारे IPFT के मिनिस्टर शुक्ला नोआतिया है, हमारे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू है, LOP अनिमेश है, हमारे समाजपति से रिप्रेजेंटेटिव दिलीप देव वर्मा है, काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदा से। तो ये सिर्फ एक पार्टी का जीत नहीं है, ये जाति का एक उदाहरण हुआ है। हमें आगे देखना है एज वन कम्युनिटी, एज तिपरासा पीपल। एंड टुडे आई फील my grandmother had signed the instrument of merger and we became a part of India. After that, her grandson has signed. That time, my grandmother signed it with the Home Minister of India, Sardar Patel. And today, we have signed something which is historic with the Home Minister of India. And we should be mature, responsible, and look ahead and still work hard. It is too early to celebrate. We have to be happy, but we have to keep on working hard, because if you celebrate too much, you tend to take things very easily and then work does not get done. What is there in the MOU? The MOU accepts the historical legacy of Tripura, also looks towards restoring and ensuring our land, our language, our identity, our economic and our political aspirations. Any time frame given? Yes, the time frame has been given. Let the Mr. A.K. Mishra tell you, but the time frame has been given. We don't want this to drag on. Time frame it will be done as soon as possible. For Any package? All this will be discussed subsequently. The idea is to ensure rights. Money will come, but first we have to ensure rights have to come. And that's the main moot, that if you can ensure the rights and the survival and existence of the indigenous people by ensuring their land rights, by ensuring their language, by ensuring our political and economic aspirations, and also accepting the historical reality, that is the most important thing. दादा, काफ़ी लंबे समय से आप ये मांग कर रहे थे। एक सवाल ये भी है कि जो गैर भाजपा सरकार थी, उनके समय में ये नहीं हो पाया था। कहाँ गलती रह गई थी और कहाँ मामला फंस रहा है? मैं इतिहास में जो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, बीजेपी क्यों कर रही है, ये मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा। ये उनकी थिंकिंग होगी। मैं भी कांग्रेस में था एक समय, हमने उस समय भी 125th अमेंडमेंट के लिए बहुत बात किया। मिस्टर बीके रांखौल INPT में थे, वो उन्होंने भी डायरेक्ट फंडिंग के लिए बात किया था उस समय। लेकिन 10 साल थी UPA 1 and 2, कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, उनकी अपनी वजह होगी। लेकिन आज मैं अपने लोगों को एक बात कह सकता हूँ कि आज हमने जो संकल्प लिया था, आज हमने जो प्रॉमिस किया था अपने लोगों को, जाति ओवर पार्टी, आज इसी के लिए हमें IPFT के लोग भी हैं, मिनिस्टर हैं यहाँ में। हमने आज सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हमने एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। All right, so Wasbir, we have heard the man of the moment, Yes. Pradyut Dev Barma. Absolutely, Priya, Pradyut Dev Barma. We are getting more reaction, Wasbir. Hello. Okay, I am now joined by the man himself, Mr. Pradyut Dev Barma. Mr. Pradyut Dev Barma, can you hear me? Wasbir here. Can you hear me, Pradyut Dev Barma? Can you hear me? Wasbir here. We are joined by the man of the moment, Mr. Pradyut Dev Barma, the Tripura Motha leader, who has just signed the accord. Mr. Pradyut Dev Barma, can you hear me? Okay, we are trying to fix that line with Pradyut Dev Barma. We have just lost the line. Okay, so, okay, Mr. Pradyut Dev Barma, can you hear me? First of all, Wasbir here. Wasbir, I can hear you. Hearty congratulations. Thank you, Wasbir. I can hear you. Hearty congratulations to you. And all your efforts, hard work of your people have finally yielded results. Thank you, Wasbir.
But before congratulating me, I think I would like to congratulate my community and the people of Tripura. I think it is because of their love and their support for me that we have been able to achieve this. Now, what would you like to tell the thousands of Tiprasa people who are now out on the streets celebrating this victory? Hathai Kotor is full. All roads are leading to Hathai Kotor. I am reaching Agartala tomorrow. I will address them myself. All I want to say is that the work is half done. We should celebrate, but we should also be very mindful that hard work comes after this. We cannot celebrate and become too lax. Committees will be formed, and we have to then work together and give even more effort to ensure that our language, our rights, political, economic, social, land is all ensured in the next within the time frame of this agreement. Now, Mr. Pratudyapaman, are you satisfied? Are you satisfied with the provisions of the accord? Because you have been demanding first, it started with Greater Tipra land, then you wanted constitutional rights. Are you satisfied today? I am satisfied, but the most important thing is we have signed the accord. We have to now work together. I've got people from IPFT also here. Sukla Nuwatia is from IPFT. We may be in a different political party, but we have to work together as Tiprasas. And if we can work as Tiprasas, then we can deliver the constitutional rights to our people. What is constitutional rights? Constitutional rights is right over land, right for your language, right of your identity, right to ensure political representation, right to have your an acknowledgement of your history, and right to culturally also develop us. So these are various factors, and we have to all work together, not as a party but as a jati. And I think that is the most important message that I want to give to all my people. Yes, we have achieved. This is a step in the right direction. Yes, we should celebrate, but we should also keep in mind, after the celebration, hard work follows. If we just celebrate and don't do any hard work after this, nothing will happen. We have to keep on working to ensure that the poor, the garib Tiprasa जो गांव में है, उनके बच्चे का भविष्य को कुछ कल मिले. Now, I will not take much of your time. What would you, who do you give the credit to the people, to the government of India, to Prime Minister Modi himself, to Mr. Amit Shah? Who would you like to prioritize? My first thank you is to the poor mother in a village in Tripura who gives a birth to a child. एक गरीब माँ जो अपने बच्चे को जन्म देता है लेकिन उसका भविष्य को बनाने के लिए रोज परिश्रम करता है. That आज उनकी जीत हुई है. एक गरीब तिपरासा का आज जीत हुआ है. उसके बाद I would also like to thank, सब लोग भूल जाते हैं, I would also like to thank people like B.K. Rankhol, who has given a lot. He sacrificed his entire life. Vijay Babu, where are you? Please come here. Don't. He has given everything to his life. I would like to thank him. I would like to thank my Tiprasa brothers and sisters. And of course, the Home Minister of India, the Prime Minister of India, who actually have acknowledged the indigenous people's problem and want to bring a final solution to their pain and suffering. Tripura has suffered a lot in the last 75 years, and this is a step in the right direction because the government of India has actually signed an agreement not with any armed outfit but with an organization which is actually not fighting for anything but for the constitutional rights of the indigenous people. I would like to thank the Prime Minister and the Home Minister along with other leaders as well. Now, will the political arithmetic in Tripura change? What do you have to say? I'm not concerned about politics right now. Right now, it's a victory of a community, not over any other community. I also would like to thank a lot of people from the Bengali society who have come and supported us. I think they have shown their kind-heartedness. I thank them as well. This is not the time for politics. Today, I would actually like to go back to Tripura, break my fast, and just spend some time because it's been very exhausting for me, and it's been an emotional roller coaster. I've lost a lot personally, sacrificed a lot personally. I just would like to go back and have a good night's sleep and then
think about all these things tomorrow. Absolutely, Mr. Pradut Debbarman. Thank you very much for giving your first interview to Notice Live after the signing of the historic accord. Thank you so much, Pradut. Belai belai no hambai. Thank you so much. Well, that was Pradut Debbarman giving his first interview to Notice Live. Mr. Pradut Debbarman, exclusive interview to Notice Live immediately after signing up that historic accord. He says that too early to celebrate, we'll have to achieve a lot. And he also said the time frame has been given as far as the implementation of the accord is concerned, and money will come. The idea is to ensure the rights of the tribal people. That's what he said. And he also disclosed that a joint working committee will be formed that will carry forward the implementation of the Tiprasa accord. Notice Live on top of the story at this point in time, the Tiprasa accord. Viewers. Right, Wasbir. So this day is being dedicated to the people of Tiprasa. This is what the man of the moment, Pradut Debbarma, said. So viewers, on your screens, you can see Hatay Kotor, visuals coming in from Hatay Kotor. In fact, live visuals coming in from Hatay Kotor, where hundreds of people, thousands of Tiprasa people, they are celebrating the day today. And their leader, their Bubagra, Pradut Debbarma, will be reaching Agartala and will be taking part in the celebration. So indeed, a big day. Our editor-in-chief, Wasbir Hussain, spoke exclusively to Pradut Debbarma right after signing of the Tiprasa Accord, and he very clearly said that he dedicated this day to the Tiprasa mother, to the poor Tiprasa people who have been fighting for this day since many years. All right, we will give you minute-to-minute updates. Keep watching Northeast Live. দেউতাই আমাৰ কাৰণে কিমান পৰিশ্ৰম কৰে, কিমান গধুৰ ওজন উঠায়, কিমান ঘাম মাটিত পেলায়। হাড় কঁপোৱা শীতৰ সৈতে যুঁজে। আমাক দেউতাই মজবুত কৰে, কিন্তু দেউতাক মজবুত কৰে কোনে? মোদীজীয়ে। 1.5 গুণ MSP দি, কৃষক সন্মানৰ উপহাৰ দি, অনলাইন মণ্ডি খুলি, ফচল বীমাৰ বীমা সুৰক্ষা